I'm asking you children, how many of you have registered for exhibition? कितने लोगों ने पार्टिसिपेट करने के लिए रजिस्टर कर दिया है? Will register after this class. No, children, see, you have to register yourself and you have to plan that which exhibit you are going to show in the exhibition. Okay, so you have to register your name immediately and you start thinking about the project. Okay, children, I want all of you to participate. See, okay, this is this is one of the subject enrichment activity for which you will be getting 5 marks, and those who are not participating, they will not be given 5 marks. They will not be evaluated in subject enrichment activity. Okay, children, so be sure that you are participating in the exhibition and you are making good relevant model, or you are making a project. Okay, children, I want response from all of you. Simply, Anusha is telling that I will register after this class. Dheeraj Solanki is telling I will register after this class. Everyone has to register. Pratik Sahu, what about you? Kuber Meena, Shreyas Pakhare, आप सभी को ये रजिस्टर करना है, ठीक है बेटा? Okay, all of you have to register yourselves. Now, Sir, please repeat. Yes, any problem? Any problem? Now let us come back to our topic, conversion of one form of state into another. Okay? Chapter number 1. Matter in our surroundings. Now, इस चैप्टर में हमने पढ़ लिया है व्हाट इज मैटर. आदित्य निश्चल, the syllabus for periodic test is chapter number 2 is matter around us pure. That chapter is completed, no? That chapter is completed or not? So yes sir. So this chapter will be your syllabus for periodic test. Okay? Okay, sir. Okay sir. Now let us come back to our this chapter. In this chapter we have studied what is matter, what are the 3 different types of matter: solid, liquid and gas, depending upon the characteristic properties of particles of matter, that is atom. We have all studied about that. Then in the last class we have studied how to convert one system of unit into another. We have converted Kelvin into degree Celsius into Fahrenheit and vice versa. Have we done or not? I am asking, have you? Yes, sir. Do you have any problem in converting one system of unit into another? No, sir. Okay, very good. Now let us see how we can convert one state of matter into another. Conversion of one state into another. See, this is very important topic. This is very important topic. Conversion of one form of matter into another. देखो ध्यान से, what happens to solid when we heat it? When we heat it, what happens to it? Initially, what will happen? The temperature of the substance will rise, isn't it? Temperature will rise. After that, what will happen? At a certain point of time, the temperature will be constant. Temperature will be constant, and the state will change from solid to liquid. Does that happens or not? Does that happen? Let us take an example. Let us take an example. So, say for example, water can exist in all the 3 states of matter. Water can exist as solid ice, it can exist as liquid water, and it can also exist as
water vapor, isn't it? So we will write down. Suppose we want to convert solid ice, then it will be converted. See, suppose what will happen? Please pay attention. This is very important topic. Conversion of one form of state into another. See, suppose there is solid ice at minus 10 degrees Celsius. Minus 10 degrees Celsius. Are you able to understand or not? Yes, sir. तो अब इसका जो मास है, फॉर एग्जांपल सॉलिड आइस m ग्राम, कितना लिया हमने इसको बेटा? m ग्राम. कितना ग्राम लिया आइस का, सॉलिड आइस का? m ग्राम लिया, ठीक है. अब इसको हीट करना शुरू किया हमने, हीट करना शुरू किया, so what will happen? What will happen? It converts to liquid. No, it will not be converted to liquid immediately. Please pay attention. ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. और अगर ये समझ में आ गया ना आपको, तो conversion of one form of matter into another will be very easy for you. तो हम लोग एक ही टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन उसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे आज. समझ में आ रहा है? Yes, sir. और हम लोग आगे जब तक नहीं बढ़ेंगे, जब तक क्लियर ना हो जाए सभी बच्चों को, ठीक है? Okay, sir. अब हीट कर लिया तो क्या आ जाएगा? इस तरह से m ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस. क्या होगा पहले? जैसे जैसे हम लोग हीट करेंगे तो सॉलिड आइस जो माइनस 10 डिग्री सेल्सियस में था, माइनस 10 डिग्री सेल्सियस में था, तो वो m ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा. अभी भी वो सॉलिड होगा, ठीक है ना? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अब उसके बाद क्या करेंगे? अगर अब हम इसको हीट देना शुरू करेंगे, प्लीज पे अटेंशन. अगर हम लोग इसको हीट देना शुरू करेंगे, तो whether the temperature of ice will rise or not, please tell me. Rise. No. What Pratik? Decrease. No, temperature will not rise. Remain constant. Yeah, why it will remain constant? Because the temperature will not rise, but we are, see Anusha, we are continuously giving the energy. So where will that energy go? Where will that energy go, children? So see, ये solid ice था m ग्राम माइनस 10 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस आ गया. तो इसका टेम्परेचर बढ़ा है कि कम हुआ है, ये बताओ. whether the temperature is increased or decreased. Yes, Anusha, give your response. Anusha. सर सेम टेम्परेचर रहेगा. नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आइस का माइनस 10 डिग्री सेल्सियस पे और इसको हीट किया, तो ये आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गया. तो इसमें इधर पे क्या हो रहा है बेटा? क्या हुआ? इंक्रीजमेंट. इंक्रीज इन टेम्परेचर. इंक्रीज इन टेम्परेचर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर. हुआ. हाँ, तब जब हमने हीट दी तो पहले टेम्परेचर राइज हुआ उसका, हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर. कितना राइज हुआ टेम्परेचर? 10 डिग्री सेल्सियस. वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड. 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज हुआ. लेकिन अब हम जब अब फिर हीट दे देंगे तो क्या होगा? Tell me, heat, what will happen? What will happen? See, I am telling what will happen. This solid ice के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे ना, आइस के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे, सपोज दिस इज आइस, दिस इज सॉलिड. नो, इस पे अटेंशन. ये पार्टिकल्स है ना. So when we provide heat or temperature is right, heat is given. So now what will happen?
The space between particle increases. Very good. They will The gain. interparticle distance will increase. They will. 1 minute. They will gain kinetic energy. They will gain Kinetic energy. kinetic energy, and hence these interparticle forces of attraction will be overcome, and they will be free. They will be free. ये क्या हो जाएंगे? Free. They will be interparticle bond. जो interparticle bond है ना इनके बीच में, वो टूट जाएंगे. ओके, वेरी गुड. पॉइंट्स विल इंक्रीज. तो interparticle distance इतना हो जाएगा कि it will come to liquid state. It will come to Liquid state. Liquid state. Liquid state. So what we can say, see, the energy which is provided to the ice at minus 10 degrees Celsius, it is utilized in two manner. It is utilized in two manner. First, to raise the temperature of the substance, to rise the temperature of the substance. Second, to break the interparticle bond. To break the interparticle bond, or to overcome the force of attraction between the particles of solid. Particles of solid, that is ice. आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. आ रहा है सर. आया कि? हाँ, very good. अब तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? M ग्राम वाटर, और वाटर का टेम्परेचर क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस. क्या होगा? 0 degree Celsius. बात आगे समझ में कि नहीं आई? Understood, sir? अंडरस्टूड. वेरी. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? टेम्परेचर चेंज हो रहा है. क्या हो रहा है? Yes, sir. क्या हो रहा है? टेम्परेचर चेंज. यहाँ पे क्या हो रहा है? टेम्परेचर चेंज. और यहाँ पे क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग ओवर देयर? The Temperature is spaces constant. between particles increases. The distance between the particles increases, and the solid is converted into Liquid. 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 state change occurs. State change. यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, यहाँ पे स्टेट चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है. हो रहा है ना? ठीक है ना? Yes, sir. ओके. Okay, sir. अब उसके बाद फर्दर अगर हम लोग इसको हीट करेंगे तो क्या होने वाला है? बोलो. If it is heated 10 gram water at 0 degree Celsius is heated, what will happen? State will change. Stage and temperature will change. No, temperature will change. Temperature will change. Temperature will change. Up to where? Temperature will change. कब तक होगा? Boiling point तक. कब तक होगा बेटा? Boiling point. Boiling point. Boiling point. Boiling point is the temperature beyond which the liquid is converted into gases at atmospheric pressure. At atmospheric pressure. नहीं आई बात समझ में? आ गई, sir. Okay, sir. आ गई सर. तो इधर पे आ जाएगा n gram water at 100 डिग्री सेल्सियस. ठीक है? ओके. अरे ये फ्लो चार्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. ओके. अब इसको और हीट करेंगे तो क्या होने वाला है? वो State change. Temperature will change. And stage will change. वेरी गुड. स्टेट चेंज हो जाएगा. क्या हो जाएगा? स्टेट चेंज हो जाएगा. ठीक है ना? तो स्टेट चेंज क्या हो जाएगा? m ग्राम क्या हो जाएगा? m ग्राम क्या हो Of जाएगा? water vapors. वेरी गुड. Vapor. Water vapor. वाटर वेपर्स और स्टीम. वाटर वेपर्स और Steam. 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 ठीक है बेटा? तो अब सुनो यहाँ से. प्लीज पे अटेंशन. देखो सर, सॉलिड आइस माइनस 10 डिग्री सेल्सियस पे था, तो हमने इसको हीट किया तो क्या हुआ? चेंज हुआ ना? टेम्परेचर चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, sir. Yes, sir. Yes sir. तो यहाँ पे जो एनर्जी दे रहे हैं वो किसके लिए यूज हो जा रही है? टू राइज द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस. टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस. और यहाँ पे जब हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस, व्हाट दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस. व्हाट इज इट?
melting point of Melting point of ice. melting point. Melting point is the temperature of a solid beyond which it is converted into liquid state. It is converted into liquid state. Okay, children. ओके, तो यहाँ पे एनर्जी कहाँ किसलिए यूज हो रही है? स्टेट चेंज में यूज हो रही है. ब्रेक द बॉन्ड्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर. ब्रेक द बॉन्ड्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर. ओके ओके बेटा, तो यहाँ पे ओके सर. चेंज में देख जा रही है, स्टेट चेंज हो रहा है ना, तो हीट हम देते जा रहे हैं, हीट देते जा रहे हैं, तो वो हीट कहाँ यूज हो रही है? In the conversion of state. हाँ, टू ब्रेक द बॉन्ड्स, तो हमें दिख नहीं रही ना, इट इज नॉट बीइंग सीन. टेम्परेचर चेंज हो नहीं रहा है, तो दिस एनर्जी इज कॉल्ड हिडन एनर्जी. उसको क्या कहते हैं? Hidden energy. Hidden energy. हिडन एनर्जी. इट इज गिवन द नेम लेटेंट हीट. क्या बोलते हैं बेटा? Latent heat. लेटेंट हीट. ओके, अब लेटेंट हीट दो प्रकार की होती है. लेटेंट हीट व्हेन द स्टेट चेंजेस फ्रॉम solid to liquid, it is called latent heat of fusion. ओके, अब जब ये वाटर बन गया, फिर वाटर को हीट किया, तो उसके बॉइलिंग पॉइंट तक तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा sir. बॉइलिंग पॉइंट के बाद बॉइलिंग पॉइंट जब रीच हो जाएगा, उसके बाद टेम्परेचर बढ़ेगा? No sir. नहीं. क्या होगा फिर उसके बाद? क्या होगा? State change. हाँ, स्टेट चेंज होगा. तो स्टेट चेंज जब हो रहा होता है, लेकिन जब हमें एनर्जी दे रहे हैं, तो वो एनर्जी कहाँ यूज होती है? In the conversion of state. टू ब्रेक द बॉन्ड्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर. टू ब्रेक द बॉन्ड्स, जो लिक्विड के बॉन्ड्स है उसको ब्रेक कर देते हैं, ताकि वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाए, ताकि वो क्या हो जाए? गैसेस में कन्वर्ट हो जाए. गैसेस में कन्वर्ट हो जाए. सो दिस अगेन इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. क्या बोलते हैं इसको? Latent Latent heat of heat of vaporization. Vaporization. लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. ओके, एनी प्रॉब्लम? No, sir. No sir. प्लीज Sir, I have a doubt. यस, प्लीज आस्क. Sir, what happens if we don't directly increase the temperature of water, of liquid, at the boiling point of the liquid, that is 100 degrees Celsius? इट विल रिमेन लिक्विड. Okay, sir. अब सुनो ध्यान से. प्लीज मेक दिस फ्लो चार्ट. आफ्टर दैट वी विल नोट समथिंग एल्स. प्लीज नोट डाउन. ये आप फ्लो चार्ट बना लीजिए. फ्लो चार्ट बना लीजिए. Done, sir. All of you have made this flow chart. Yes sir. All of you have made this flow chart. So can we proceed further? Yes, sir. Okay, very good. Okay, sir. चलो. See, one state can be converted into another state by two parameters, either changing temperature or either changing pressure. तो टेम्परेचर चेंज से भी स्टेट चेंज हो जाएगा, और प्रेशर चेंज से भी. अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. क्या देख रहे हैं बेटा? Temperature effect. इफेक्ट ऑफ Temperature. Effect of temperature. ओके. So write down. Write down. One state of matter can be converted into another. Another by changing first temperature. Sir, right side is not visible. Okay, I am reading it for you. One state of matter can be converted into another by changing. बस इतना लिखना है आपको वहां पे. By changing, ठीक है? Okay? Okay sir. By changing temperature and second वाला pressure.
temperature. That is having the effect of temperature. Effect of temperature. Like this. Write down when a solid is heated, when a solid is heated, its temperature increases. Its temperature increases. Its temperature increases. Its temperature increases. Which increases the kinetic energy of particles. Kinetic energy of particles. Kinetic energy of particles. Which increases kinetic energy of particles. And thus particles become energetic. Okay. If more heat is given, then what important? If more heat is given to the solid, it is used. This temperature, it is used to break or overcome the force of attraction between the particles. 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 And thus particles become free to move, and thus solid is converted into liquid state. Liquid state. Okay, what is this temperature called? The temperature at which a solid is converted into liquid at atmospheric pressure. Is called what? क्या बोलेंगे? Melting point. What is the melting point of ice? Zero Zero degree degree Celsius. Celsius. 0 degree Celsius. Very good. For example, ice has melting point of
0 डिग्री सेल्सियस, आयरन इज इक्वल टू कितना होता है बताएं किसी को? अप्रोक्सीमेटली 1535 डिग्री सेल्सियस, 1535 डिग्री सेल्सियस। वैक्स 63 डिग्री सेल्सियस एक्सेट्रा। वैक्स इज इक्वल टू 63 डिग्री सेल्सियस। सो चिल्ड्रन लिसन, मेल्टिंग पॉइंट जिसका जितना ज्यादा होगा इसका मतलब है उनके बीच में इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उतने ज्यादा है, बिकॉज वी हैव टू प्रोवाइड मोर एनर्जी, we have to provide more energy in order to break the bonds between the particles, isn't it? So melting point is a measure of interparticle force of attraction between the particles of a solid. Do you agree with this or not? Yes, sir. Yes, sir. Agreed, sir. Have you noted this? Yes, sir. Okay, No, sir. please note down. Those who have not noted, please note down. Please note down, children. Melting is also called fusion. Melting is also called what? Fusion. Melting is also called fusion. Is also called fusion. Melting point of a solid is a measure of strength of interparticle force of attraction. Interparticle force of attraction in a solid. यानी जिसमें जितना ज्यादा इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही उसका ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। यानी अगर हम लोग आइस को और आयरन को कन्वर्ट करें तो मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा है? Iron. तो इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें ज्यादा होंगे? Iron में. Iron में। Iron में। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है ना बेटा? तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे इफ व्हाट हैपेंस व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड, तो आप बोलोगे व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड up to a temperature called melting point, its temperature will increase, and if we continue to heat it more and more, then the temperature will remain constant at the temperature called melting point, and if we continue to give heat, that heat energy is used to break the bonds or overcome the forces of attraction between the particles of the solid, and thus that heat is used to change the state from solid to liquid. That heat is called latent heat of fusion. That heat is called what? Latent heat of fusion. Latent heat of fusion. ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या फिर क्या बोलेंगे? Latent heat of melting. हाँ, वेरी गुड, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एक ही बात है, ठीक है बेटा? Now shall I rub the board? Yes, sir. Okay, very good. लिखेंगे हम लोग latent heat. हेडिंग डाल दो latent heat. या latent heat of fusion ऐसे लिखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेटेंट हीट ऐसे लिखेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक, when a solid is heated,
its temperature increases, its temperature increases to a point, to a point called melting point. Melting point. At this at this point, please pay attention. At this point, if more heat is given to the solid, given to the solid, given to the solid, the temperature of the solid does not increase. The temperature of the solid, the temperature of the solid, does not increase, does not increase. तो जब ये टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, तो जब हम लोग एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, वेयर इज दैट एनर्जी गोइंग? वेयर इज दैट एनर्जी गोइंग? कैन यू टेल मी? वेयर इज दैट एनर्जी गोइंग? अनुषा, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है तो एनर्जी हम लोग देते जा रहे हैं, तो एनर्जी कहाँ जा रही है? Inside the solid to break the bonds. Very good. Very good. The heat energy provided is present. The heat energy provided to the solid, provided to the solid is used to overcome the forces of attraction, forces of attraction, forces of attraction between the particles of matter, between the particles of solid, so that it is converted into liquid. It is converted into liquid by melting or fusion. Melting or fusion. Okay? This heat energy is hidden. That is why it is called. That is why it is called latent heat. Latent heat. Since solid is converted into liquid, so it is called latent heat of vaporization, latent heat of fusion, latent heat of fusion. समझ में आया बच्चों के नहीं आया? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. Yes, sir. आदित्य, निश्चल, अनुषा, प्रतीक और लोग आया कि नहीं आया? Understood, sir. आ गया सर. वेरी गुड. तो नोट कर लिया? Have you noted this? Yes, sir. अब लिखो बेटा. Please pay attention. It is represented as LF, latent heat of fusion, LF, okay? LF is equal to heat upon mass of liquid. Latent heat की यूनिट क्या होगी? जूल पर किलोग्राम
किलो जूल पर किलोग्राम या फिर जूल पर ग्राम, ठीक है? एनी प्रॉब्लम? Note Done, sir. See, let me define latent heat of fusion. Latent heat of fusion of a substance is the amount of heat required to convert 1 kilogram of a solid into liquid at melting point. At melting point, this energy will be called as latent heat of fusion. Can you write the definition of latent heat of fusion? Yes, sir. I am going to write on the board. You can note down. Shall I rub the board? Shall I rub the board? Yes, sir. ओके सर। Okay, मैं रब कर रहा हूँ. Latent heat of fusion की definition लिख देंगे. See, the heat energy, required convert 1 kg of a solid, 1 kg of a solid into liquid at its melting point. Melting point is called latent heat of fusion. Heat of fusion. ठीक है बेटा? तो LF is equal to heat supplied upon mass of solid. heat supplied जूल में भी लिख सकते हो और mass of solid किलोग्राम में भी. तो ऐसा यूनिट LF की क्या हो जाएगी? जूल पर केजी. क्या हो जाएगी? What is the SI unit of LF? लेटर लिखो जूल पर केजी या किलो जूल पर केजी. ठीक है ना? जूल पर केजी या किलो जूल पर केजी. Understood or not? ओके सर। All of you understood? Very few Yes, number. sir. Very few number. 1 minute. Very few number of children are attending the online classes. Why is it so? Why your friends are not attending the online classes? See, children, those who are not attending online classes, they will not be given weightage for their assignments and all that. Whether you are submitting all your assignments in the Google Classroom, that is given to you or not. Are you submitting? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And see, our school is going to conduct exhibition, so you have to participate in that. For that, you have to register. All of you have to register. Aditya, have you registered? Yes, sir. Okay, very good. So now I am ending up the session. Thank you and have a nice day. In the next class, we will see how that liquid is converted to gas by the application of temperature, and also we will see the effect of pressure on conversion of one state into another. Okay, children? Okay, sir. Thank you and have a nice day. थैंक यू सर। Thank you, sir. Okay, children.